morning everyone. Today we will deal with the chapter Respiration in Plants. As we discussed in earlier chapter, that is the photosynthesis in higher plants, इसमें हमने क्या पढ़ा था? By the process of photosynthesis, glucose is synthesized and that is the biological process formation of glucose. And now here we will discuss about broken down of that glucose and released energy by which process. Here we will discuss about that is the respiration. यहाँ पर हम पढ़ेंगे respiration में क्या होगा, broken down of glucose and release the energy currency. Before that we will discuss about the first point. Breathing is the essential process and what happens in breathing. Breathing में क्या होता है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का रोल है. ऑक्सीजन इज इनहेल्ड इन ब्रीथिंग एंड CO2 इज रिलीज्ड. नाउ इनहेल एंड एक्सहेल को हमने ब्रीथिंग कहा एंड रेस्पिरेशन क्या है. रेस्पिरेशन इज अ सेलुलर फिनोमिना दैट हेल्प टू ब्रोकन डाउन अ कंपाउंड biological compound. Glucose is broken down in the presence of oxygen and release energy in the form of ATP, that is known as cellular respiration. Means why cellular? Because this process occurs where at the cell. This is known as cellular respiration and this process takes place in plant as well as in animals. Now we know that energy is needed for plant and animal also to perform their work. सभी प्लांट्स को और एनिमल्स को वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए और एनर्जी कहाँ से मिलेगी? दैट एनर्जी टेकन बाय द फूड. आप लोग वर्क करते हैं, कोई भी वर्क कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, प्लेइंग कर रहे हैं, कुछ भी करेंगे तो उसके लिए आपको एनर्जी चाहिए. वो एनर्जी आपको कहाँ से मिलेगी? फूड कंपोनेंट से मिलेगी. फूड आपने लिया, उसका ब्रोकन डाउन होगा स्मॉलर सब्सटेंसेस में एंड देन उससे एनर्जी रिलीज होगी. नाउ प्लांट्स को फूड कहाँ से मिलता है? हाउ दे गेट फूड? प्लांट, वी नो दैट प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड दैट मटेरियल photosynthesis product is used to form the energy currency. Means glucose is formed in photosynthesis and stored in the form of starch, in plants, and different part of the plant need energy. So here we will discuss food is synthesized in plant in the leaf in the form of glucose, and suppose stem and root, these are not synthesizing food and they also need energy to perform their work. Then what happened here? Translocation of energy takes place. Translocation of energy takes place from one place to another, from leaves to another part like stem, like root. And what means by autotrophs? Autotrophs क्या है? Autotrophs, these are the producers that produce food that by the process of photosynthesis. And now अगर हम आगे देखेंगे नेक्स्ट प्रोसेस में, तो यहाँ पर देखेंगे मैक्रोमोलेक्यूल. These are the starch. Starch are the macromolecule that are synthesized by the process of photosynthesis and stored in the plants. Now animals depend on food. Animals depend on plants for their food, and if we discuss about the types of animals, then we get that there are many types because animals are heterotrophs. Animals are known as heterotrophs, and heterotrophs are the animals that take their own food from the plants, from the producers. कहाँ से लेंगे ये अपना फूड? ये लेंगे प्लांट से. And plants are known as producer and these are also known as
Autotrophs and animals are known as heterotrophs. They depend directly or indirectly in plant for their food. या तो डायरेक्टली प्लांट को एज अ फूड लेंगे या फिर इनडायरेक्टली लेंगे. तो डायरेक्टली में क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा हर्बीवोर. देन नेक्स्ट कार्निवोर एंड ओमनिवोर. ये क्या है, इनडायरेक्टली एनिमल्स दैट इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड. इसके अकॉर्डिंग हम आगे देखेंगे पैरासाइट्स भी एक टाइप के कंज्यूमर्स हो जाते हैं. पैरासाइट्स एंड सेप्रोफाइट्स. व्हाट मीन्स बाय द सेप्रोफाइट्स? सेप्रोफाइट्स आर द एनिमल्स that take their food from the dead and decaying matter. These are the saprophytes. Now plants photosynthesize करेंगे, ऑक्सीजन यहाँ पर रिलीज होगी. एंड नाउ समटाइम्स दे also use oxygen. Plants also use oxygen to perform respiration process. and respiration में होगा क्या, respiration में होगा broken down of material, that is the glucose, and this process takes place where in specific place, that is the mitochondria. ये process कहाँ चलेगी, mitochondria में चलेगी. नेक्स्ट हम सेलुलर ऑर्गेनल के बारे में बात करेंगे. माइटोकॉन्ड्रिया. व्हाट इज द माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया इज अ टाइप ऑफ ऑर्गेनल. एज वी अर्लियर डिस्कस्ड अबाउट द क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट क्या था? क्लोरोप्लास्ट एक प्लांट सेल का ऑर्गेनल है जिसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए स्पेसिफिक पिगमेंट प्रेजेंट है, दैट इज द क्लोरोफिल. एंड अगर हम इसका प्लांट सेल का बात करेंगे तो प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा. मैनी ऑर्गेनल सेल में से माइटोकॉन्ड्रिया भी है एंड एट द पेरीफेरी न्यूक्लियस. As we know, mitochondria are the site of cellular respiration. And what are the chloroplasts? Chloroplasts are, these are the plastids containing pigments, and here this is the chloroplast and contain here grenoid stroma, and that bears chlorophyll inside it. इनकी हेल्प से लाइट की ट्रैपिंग होगी, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट होगी, एंड बाय द लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन ग्लूकोज सिंथेसाइज होगा. दैट ग्लूकोज ट्रांसफॉर्म टू द अनदर पार्ट ऑफ द सेल. जहाँ सिंथेसाइज हुआ एंड देन यहाँ से ट्रांसफॉर्म होके आएगा नेक्स्ट स्टेप में. यहाँ कुछ अमाउंट में एटीपी यहाँ भी बनेंगे, क्लोरोप्लास्ट में भी कुछ अमाउंट में एटीपी सिंथेसाइज होंगे, and then most of the ATP synthesized in where, in the mitochondria. and ये प्रोसेस कैसे कंप्लीट होगी ये हम आगे देखेंगे. यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे रेस्पिरेशन एंड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट. रेस्पिरेशन इज a process where glucose is oxidized and substrate. What are the respiratory substrate? Any material that is oxidized in the presence of oxygen is known as respiratory substrate. Now यहाँ पर हम देखेंगे कि ग्लूकोज को ब्रोकन डाउन चलेगा. ग्लूकोज that is synthesized by the dark reaction comes into the cytoplasm. में कहाँ आएगा? अब साइटोप्लाज्म में आएगा. साइटोप्लाज्म में अब ग्लूकोज का ब्रोकन डाउन चलेगा एंड ये एक लॉन्ग स्टेप प्रोसेस है. ये कई स्टेप्स में कंप्लीट होगी और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये फ्रीली रिलीज नहीं होगा. ग्लूकोज फ्री नहीं रहेगा, ये स्पेसिफिक एनर्जी करेंसी की फॉर्म में रहेगा, दैट इज द एटीपी. किस फॉर्म में रहेगा? एनर्जी करेंसी एटीपी के फॉर्म में. हाँ, अब आगे देखेंगे ग्लूकोज के ब्रोकन डाउन के स्टेप्स. ब्रोकन डाउन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस इन मैनी स्टेप्स.
और यहाँ पर हम साइकिल्स देखेंगे कितनी साइकिल्स चलेंगी। एक चलेगा ग्लाइकोलाइसिस साइकिल एंड दूसरा है क्रेब्स साइकिल। 2 स्टेप्स है ग्लूकोज के ब्रोकन डाउन का। 2 स्टेप्स, फर्स्ट वन इज glycolysis and second one is Krebs cycle. Now here we will discuss at the cytoplasm. ये क्या है cytoplasm में? साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन चलेगा एंड पायरुवेट का फॉर्मेशन होगा, दैट इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस एंड पायरुवेट enter into the mitochondria and here ATP is synthesized, that's known as Krebs cycle. These cycles we will discuss in the next video. Okay, thanks to all.